In today's class, we will see how to find the order of the reaction. Like there are different methods to find the order of the reaction. The first method is how to find the order of reaction के अंदर we will take first method as initial rate method. Now initial rate method, initial का मतलब क्या है? Means rate just at the beginning of the reaction. As soon as you take the reactants, you mix them well, the reaction starts at the beginning itself. What is the rate of reaction is taken as the initial rate method. Now this will take by taking one example. We carry out a set of experiments and we get the following data. For example, this is a set number or experiment number. We have a reaction A plus B changes to C. So here we have two reactants, A as well as B. So we'll take next, we'll take the concentration of A in moles per liter, concentration of B in moles per liter, and then we have initial rate R, whose units will be moles per liter per second. Square bracket means moles per liter, so I am not writing the units here. So first experiment we will be starting with 0.1 mole of A, 0.1 mole of B, and let the rate of reaction is 2 into 10 to the power minus 4 moles per liter per second. Whatever, these all are hypothetical values. I am just explaining how to get the initial order of reaction using this method, initial rate. So this data will be given to you always. In the second experiment, we keep the concentration, we vary the concentration of A from 0.1 to 0.2 कर दिया, double कर दिया. B का concentration same रहने दिया, and now it is 4 into 10 to the power minus 4 moles per liter per second. Third में keep the concentration of A same 0.1, double the concentration of B 0.2 and let it be 8 into 10 to the power minus 4 moles. So these values जो मैं दे रही हूँ, these all are hypothetical. You will be given data. You can perform experiments by changing the concentration. Now to find the order of the reaction, we first propose let the rate law. आप एक मान लोगे कि जो rate law है वो क्या है? R is equal to K, A to the power M and B to the power N. Let the order with respect to M, A is M, with respect to B it is N. Now we have to find the values of M and N using this data given to us. Now if we take experiment number 1 and 2, 1 and 2 में we are changing the concentration of A but keeping the concentration of B constant, and there is an increase in the rate of reaction. Now this increase is because of the increase in the concentration of reactant A. So if I deal with these two experiments will give the effect of concentration of A on the rate of reaction. Now we take this. Now from experiment, या आप इसको लिख सकते हो divide experiment 2 by 1. तो आपका क्या है कि R के नीचे R लिखेंगे. It is 4 into 10 to the power minus 4 upon 2 into 10 to the power minus 4 is equal to K upon K cancel हो जाएगा आपका. A का concentration second experiment में कितना है? 0.2. फर्स्ट में 0.1 to the power N, 0.1 upon 0.1 to the power N. Now this cancels, so you are left with, यहाँ बच गया 2 is equal to, यहाँ पे क्या रहेगा आपका 2 to the power M. So from here we can say M is equal to, bases are same, the power gets equal, M is equal to 1. This is how we find the order with respect to A. A के respect में order क्या हो गया? 1. अब similarly B के respect में निकालना है. अब यहाँ देखोगे जहाँ B की concentrations constant है. Now B का relation लेना है तो we have to see where the concentration of A is kept constant. Means now we have to deal with the experiment 1 and 3. तो अब हम क्या करेंगे? Divide experiment 3 by 1. अब इन दोनों में कंपैरिजन है. तो 3 में देखो, this is 8 into 10 to the power minus 4 upon 2 into 10 to the power minus 4 is equal to K upon K हो जाएगा. थर्ड एक्सपेरिमेंट में A is 0.1, फर्स्ट में it is 1 to the power M,
यहाँ पर it is 0.2, here it is 0.1 to the power n. अब यहाँ पर this cancels out, this cancels out, यहाँ पे रह गया आपका 4 is equal to 2 to the power n, or you can say n is equal to 2. So now you have find the order with respect to A as well as B. Now your rate law becomes, अब जो हमारा final rate law आ गया, that R is equal to K times A to the power 1 and B to the power 1. That is, with respect to A, order is 1, with respect to B, the order is 2, and the overall order of the reaction is equal to 3. This is how we find the order of the reaction. Now, bache, if your reaction is elementary reaction, it is having only one order. But if the reaction is multi-step reaction, like we discussed, if the molecularity of the reaction, it comes out to be more than 3, it is a multi-step reaction or complex reaction. Now, in complex reaction, the rate of reaction depends upon the slowest step of the reaction. Yahan to rate of the reaction remains the same. If it is the elementary reaction, you can find the order. But if it is a complex reaction, it is a multi-step reaction. In multi-step reaction, the rate of overall reaction is the rate of the slowest step of the reaction. Okay, I will take this topic after discussing this order of the reaction. तो थोड़ा सा पोर्शन रह गया है, इसको मैं बाद में पहले ऑर्डर खत्म कर लेते हैं, उसके बाद में विल फाइंड आउट कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए हाउ कैन वी फाइंड द रेट ऑफ द रिएक्शन, एंड वी हैव टू प्रपोज द मैकेनिज्म एज वेल फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. तो अभी पहले हम ऑर्डर की बात कर लेते हैं. सो दिस इज इनिशियल रेट मेथड. सो दिस डाटा, वेन एवर दिस डाटा विल बी गिवन टू यू एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, you can use this method to find the order of reaction. This is initial rate method. Change the concentration of one, keep the others constant. You have the relationship between the concentration and the rate of reaction. Now the next method is initial rate method. Initial rate method. In this initial rate method, क्या करना है हमें? In our course we have to do this initial rate method for zero order reaction and first order reaction. Higher order reactions is they are not in the syllabus. So we'll first talk about the zero order reactions. For zero order reaction, अब ध्यान से देखोगे. Let us suppose let A changes to B is a zero order reaction. It means we can write the rate of this reaction as instantaneous rate. The rate dA upon dt is equal to K times A to the power 0. लिख सकते हैं ये, that rate is directly proportional to A to the power 0. Rate को भी express in terms of the reactant. Reactant की term में minus sign आ गया, minus dA upon dt is the instantaneous rate, K is the zero order rate constant, A to the power 0, because it is a zero order reaction. Now A to the power 0 is equal to 1. We can write minus dA upon dt. Right? This is the differential equation. Now integrate this equation. Upon integrating, क्या मिलेगा अगर हम इस रिएक्शन को इंटीग्रेट करें? अगर इंटीग्रेशन आप लोगों ने कर लिया है, dx को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, we will get x. तो यहां पर है माइनस dA. अभी हम लिमिट्स नहीं लगा रहे हैं, तो dA आपने इंटीग्रेट कर दिया, इधर dt आपने इंटीग्रेट कर दिया. नाउ हियर वी गेट इट इज माइनस A एंड हियर वी गेट इट इज K टाइम्स dt. K कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेट करेंगे नहीं, K इज केप्ट आउटसाइड, dt को इंटीग्रेट करा, वी विल गेट T. And let C be the constant of integration. This C is the constant of integration. Whenever we do the integration of any differential equation, we get a constant and we are representing that constant by taking C here. ठीक है. अब ये जो A है बच्चे, this dA, this is the concentration when the time is T. Now to find the value of this K, अगर मुझे इस K का वैल्यू निकालना है, तो I will put T as 0. So put T equals to 0. K का वैल्यू नहीं निकालना, सॉरी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C का वैल्यू निकालना है. Now when we put T equals to 0, KT 0 हो गया.
द C becomes equal to minus A naught. अब ये A naught क्या हो गया? This A naught is the initial concentration of the reactant. This A is the concentration when the time is T. Now if I put T as 0, इसका मतलब reaction is yet to begin. इसका मतलब जो रिएक्टेंट है वो अपनी ओरिजिनल कंसेंट्रेशन में है, तो ये कांस्टेंट C इज इक्वल टू A नॉट, वेयर A नॉट रिप्रेजेंट्स द इनिशियल कंसेंट्रेशन, A द कंसेंट्रेशन व्हेन द टाइम इज T. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस A नॉट हियर एंड वी हैव माइनस A equals to KT minus A naught. Now take the concentration terms together. We can write A naught minus A upon T equals to K. This is the integral equation for zero order reaction. अब यहाँ देखो, the initial concentration is kept constant. आप T वेरी करते जाओगे, concentration of A will keep on changing. Time 5 minutes, A क्या था? Time 10 minutes, A क्या था? 15 minutes, A क्या था? तो you substitute different values of A at different values of T. If the value of K remains the same, if the value of K remains unchanged, we say the given reaction is a zero order reaction. So if your data satisfies this equation, that difference upon T equals to K and the value of K does not change by changing the concentration of A and T, the reaction is zero order reaction. यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं, there is one more concept of half life of the reaction. What is the meaning of half life of a reaction? Half life को we represent by writing T half. जहां भी आपको T half दिखेगा, that represents the half life of a reaction. Now the half life of a reaction means the time taken for the reactants to reduce to half of their initial concentration. Time taken for the reactants to reduce to half of their initial concentration is known as half-life of the reaction. This is very 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 important concept in chemical kinetics. पूरी chemical kinetics में भी nuclear chemistry जो है, that is also based upon this first order kinetics. तो दिस इज अगेन जब आप कॉम्पिटिशन्स के लिए करते हो, दिस कंसेप्ट इज अगेन वेरी मच एप्लीकेबल देयर इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, द कंसेप्ट ऑफ हाफ लाइफ. So I think the meaning of half-life is clear. It is the time taken when the concentration of the reactant is reduced to half of their initial concentration. Now we can find the half-life of zero order reaction. यहाँ से हम क्या कर लेंगे? We say T is equal to A naught minus A upon K. Now to find the half-life अब क्या हो जाएगा? When A becomes A naught upon 2, when the concentration is reduced to half. If the initial concentration is A0 and this concentration is reduced to half of the initial concentration, that time period is known as half-life. अब इसको हम कर लेंगे तो 2A naught minus A naught, ये रह जाएगा आपका A naught upon 2K. So this is the expression for the half-life of zero order reaction. This is how to show that the given data is a zero order reaction and this is how to find the half-life of a zero order reaction. अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है बच्चे? The half-life of zero order reaction is directly proportional to the initial concentration of the reactant. अगर initial concentration 1 mole, 2 mole, 3 mole change करेंगे तो half-life भी बढ़ेगा. तो यहाँ T half is directly proportional to A नॉट. तो अगर आपको बच्चे सपोज एक ग्राफ दे रखा होता, अगर यहाँ दे रखा होता रेट और यहाँ दे रखा होता कंसंट्रेशन एंड आपको ये ग्राफ मिल रहा है, ये ग्राफ देके वो आपसे पूछते हैं प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? द रेट रिमेन्स अनचेंज विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. सो द रेट हो गया आपका, इट इज A to the power 0. इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन. और अगर ये दे रखा होता ग्राफ, यहाँ पे होता T हाफ और यहाँ पे होता आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द ग्राफ इज लाइक दिस. इसका क्या मतलब? द हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन. तो अगर ये ग्राफ दे रखा है तो ये ग्राफ क्या बता रहा है? ग्राफ कौन सा रिएक्शन एक्सप्लेन कर रहा है? अगेन इट्स द ग्राफ एक्सप्लेन्स द जीरो ऑर्डर
reaction. So you get 1 mark question on the basis of the numerical data given to you or the graph given to you, and on the basis of the graphs you have to predict. They may say for a zero order reaction the different graphs A, B, C, D are given. Because you get 1 mark objective types question in the paper, you have to choose the graph, or by looking at the graph you have to choose the order of the reaction. So this is about zero order reaction. This is the integrated rate इनिशियल रेट मेथड लिख दिया मैंने, यहाँ भी ये भी और ये भी इनिशियल लिख दिया. एंड वेरी सॉरी बच्चे, दिस इज इंटीग्रेटेड लिखना था मुझे यहाँ. इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड. This is integrated rate law method. We derive the integrated rate equation, we substitute the values, and we look at the value of K. Now we take this integrated rate law method for first order reactions, and we also have to find the half-life of the first order reactions. Now again, बिल्कुल इसी तरह से follow करेंगे. Let us say A changes to B is a first order reaction. ये हम मान के चल रहे हैं, फिर बाद में हम उसको prove करते हैं by substituting the different values. Let A changes to B is a first order reaction means इसका rate law क्या हो जाएगा? Rate is directly proportional to A to the power 1. Now we express rate in terms of the reactant A as instantaneous rate. We say minus dA upon dt is equal to K times concentration of A. Rate को concentration at time t. So this is instantaneous. Now take the concentration terms together. We can have dA upon A is equal to K times dt. Now integrate this equation upon integration. पेन जा रहा है. Upon integration we will get, अब see, अगर मैं dx upon x को इंटीग्रेट करूंगी I will get log natural x. तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा माइनस log natural a equals to, इसको if I integrate, I missed the step. Upon integration we can write dA upon d, this is a upon integration, k constant है, dt को integrate किया. Now minus log natural a is equal to k t plus c. dA upon a is minus log natural a. Again to find the value of this c, put t as 0. Put t equals to 0 to find the value of c. So again this c will becomes minus log natural a naught. अब a naught लेंगे, वापस समझ में आ गया. The same concept, when the time is 0 the concentration is the initial concentration. Now substitute here, we will have minus log natural a equals to kt minus log natural a naught. Take the concentration terms together. This is minus log natural a upon t is equal to k. ठीक है. अब दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन. नाउ लॉग इसको हम क्या करेंगे, लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, तो 2.303 ए माइनस दिस, और वी कैन से यहाँ पर आपको क्या आगे रखा है, वी कैन टेक 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के इंटू टी. Initial concentration upon the concentration at time t, or you can say 2.303 upon t log a naught upon a is equal to k. Now this is the integrated rate equation for first order reaction. यहाँ पर again a naught is fixed. Different values you will get when you change the time. Put t and a. If the value of k remains unchanged, the given reaction is a first order reaction. ठीक है. अब इसका we will get the half life of the reaction. Now to find the half life of the reaction, again we'll write this as t half
to get t half is 2.303 upon k log a naught upon, इसे भी क्या लिख देंगे, a naught upon 2 पर आ जाएगा. You will have t half 2.303 upon k. You are left with log 2. a naught cancel, 2 पर आ रहा है. Now substitute the value of log 2. It is 0.3010. Log 2 is 0.3010. Now multiply the 2 and you will have 0.693 upon k. So this is the half-life of a first order reaction. Now in this expression, if you notice, there is no concentration term involved. बच्चे यहाँ पर देखो, ये था आपका हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का. यहाँ पे टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट. यहाँ पे क्या दिख रहा है, टी हाफ, और यहाँ पर कोई भी कंसंट्रेशन नहीं है. इट मीन्स वी कैन से द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, a first order reaction is independent of initial concentration of reactants. Whatever be the concentration of the reactant, the half life remains the same. So ये आपको आता है, show that the half life of first order reaction does not depend upon the initial concentration. तो ये आपको पूरा derive करते हैं. बच्चे यहाँ से शुरू कर देते हैं, this is the half life, this is the integrated rate equation, और सीधा यहाँ से लेकर यहाँ derive कर दोगे तो you will get half marks only. To show that half life is independent of the initial concentration comes for 2 marks. So you have to begin that let A changes to B is the first order reaction, derive the first order rate equation and then this. अब यहाँ पर बच्चे देखो थोड़ा सा हम और चेंज करेंगे. यहाँ पर लाइक ये मैंने derive किया 2.303 upon t log a naught upon a, where a naught is initial concentration, a is the concentration at time t. Now if I say let, यहाँ पे यूज कर रही हूं मैं, let initial concentration of reactants is equal to a moles per liter. We start with a moles per liter. तो a naught क्या हो गया मेरे पास, a moles per liter हो गया. अब यहाँ पर what is a concentration at the time t? Now again we'll say during time t x moles have reacted. जब तक आपका 5 मिनट हुए, टाइम टी हुआ, x मोल्स रिएक्ट कर गए. तो कंसंट्रेशन एट टाइम टी पे क्या रह गया, a माइनस एक्स, विच इज नथिंग बट योर a. ड्यूरिंग टाइम टी जब तक कंसंट्रेशन a हो रहा था, x मोल्स रिएक्ट कर गए, a में से x मोल रिएक्ट कर गए, तो कंसंट्रेशन क्या रहेगी a की एट टाइम t पर, a माइनस x. Now if we substitute these two things here in this integrated rate equation, we will get k equals 2.303 upon t log a naught की जगह क्या ले लेंगे a, और a की जगह क्या ले लेंगे a माइनस, ये आप न्यूमेरिकल्स में ज्यादा यूज करोगे. 2.303 upon log a over a minus x. अब यहां से you can find द हाफ लाइफ. यहाँ पे x को हाफ लाइफ के लिए क्या ले लोगे, a/2. अब मैं बोलूं हाउ कैलकुलेट द 3/4 लाइफ ऑफ अ रिएक्शन. 3/4 लाइफ ऑफ अ रिएक्शन और 1/4 लाइफ ऑफ अ रिएक्शन मीन्स आपको t3/4 निकालना है, t1/4 निकालना है. तो यू जस्ट नीड टू चेंज द वैल्यू ऑफ दिस x. तो यहाँ पे अगर मुझे t3/4 निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, t3/4 k is equal to, या t3/4 is equal to 2.303 upon k log a over a minus, अब x कितना हो जाएगा, 3/4 of a. तो now you can solve this. 2.303 upon k log 4a minus 3a, a upon 4 हो जाएगा, तो a upon a into 4, तो you are left with 2.303 k log 4 की वैल्यू देख लेना, या इसको 2 log 2 लिख लेना. इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, दैट कैन बी टेकन एज 2 log 2. तो यू कैन हैव t3/4 of a
रिएक्शन. सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट 1/4 लाइफ. 1/4 के लिए यहाँ पे 1/4 ले लेते हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन find out the half life or any life of a first order reaction.